Hello students and welcome. Today we'll learn to use EST databases. Let's have a look at the learning outcomes of this lab session. At the end of this lab session, we will be able to locate the main EST resources. We will learn data retrieval procedures using different protein names, accession number, etc. And lastly, we will look at the ways in which we can utilize EST databases and analyze it. EST databases. Let's have a brief look at the EST database description. EST stands for ES expressed sequence tags and are widely used in genomic and functional genomic research. ESTs are short messenger RNA transcripts which are generated through complementary DNA libraries. ESTs also consist of three main databases, namely GenBank, ENA, which is European Nucleotide Archive, and DDBJ, which is DNA Databank of Japan. And lastly, ESTs have a diverse range of applications in the area of genome analysis, gene discovery, gene expression analysis, and various others like alternative/splicing studies. First one is GenBank. GenBank is basically a highly annotated nucleotide database which consists of all the publicly available nucleotide transcripts and their respective proteins. You can simply paste the URL on the search box of any browser like Chrome, Firefox, or any other, which is www.ncbi.nlm.nih.gov. So NCBI basically hosts GenBank. It produces the data and maintains the data, or we can simply say that जितना भी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा है, कंप्यूटेशनल डेटा है, वो बेसिकली NCBI उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रोड्यूस या जनरेट भी करता है और लेटर उसको मेंटेन भी NCBI ही करता है. GenBank एक सिंपली यूँ समझ लें एक इंटरफेस है जो कि डेटा अपना ओरिजिनली NCBI से ही रिट्रीव करता है. इसके अलावा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है लाइक GenBank almost contains like the bibliographic and biological annotation information of almost 300,000 different organisms. So it's a huge database. So simply open any web browser and navigate to the search box and paste the URL and simply click the hit the search button. And so this is the front page of GenBank where you can see that there is a drop down menu. And in the drop down menu you will have various other options to search for different other databases as well, like not really the databases but the data you want to what kind of data you want, you can simply select from this drop down menu. So since we wanted nucleotide data या फिर GenBank जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, हम न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस या न्यूक्लियोटाइड डेटा को सर्च करेंगे तो हमने सिंपली जो है वो न्यूक्लियोटाइड इधर से सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद जो इसके सामने सर्च बॉक्स है उधर अपनी रिस्पेक्टिव या अपने रेलिवेंट या जो प्रोटीन जिस प्रोटीन के बारे में हम डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं वो सिंपली पेस्ट कर दें. सो इन आवर केस सिंपली पेस्ट द TBX5 प्रोटीन विच इज़ the T box transcription factor 5 protein है. So after hitting the search button, this next page will be opened. ये result page है जिसके ऊपर हमारे पास results आ जाते हैं. So on the right side you can see we have different organisms जिनके अंदर TBX5 प्रोटीन जो है वो मौजूद है. इसमें हमारे पास मस मोलस्कस, ह्यूमंस या फिर काउ वगैरह भी आ जाते हैं और इनके सामने नंबर्स लिखे हैं. ये नंबर्स बेसिकली नंबर ऑफ हिट्स या नंबर ऑफ सिमिलर हिट्स बताती है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने जो है वो सिमिलर हिट्स हमारे पास मौजूद हैं TBX5 जीन के. सो वी विल सिंपली सेलेक्ट होमो सेपियन और हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट टोटल 86 जो है वो आ जाएंगे. यू कैन सिंपली स्क्रॉल डाउन द पेज. ये पेज 1 of 5 यानी टोटल 5 पेजेस पे हमारे पास टोटल 86 एंट्रीज आ जाएंगी. तो इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करके इनको सिलेक्ट ऑल करके सारा सबका डाटा एक साथ भी ले सकते हैं और सिंपली जो है वो सिंगल ट्रांसक्रिप्ट का जो डाटा भी आप रिट्रीव कर सकते हैं. सो इन आवर केस वी विल सिंपली गो फॉर द सिंगल ट्रांसक्रिप्ट. सो जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसको आप क्लिक कर लें और आपके पास जो है एक नेक्स्ट डेटा पेज आ जाएगा. सो
इस पेज के ऊपर हमारे पास जो है ये जो फर्स्ट पेज है ये हमारे पास जीबी फॉर्मेट में आ जाता है। जीबी फॉर्मेट बेसिकली एक डिटेल्ड वर्जन है जिसमें हमारे पास लोकस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एक्सेशन नंबर, इसके अलावा जर्नल, किस जर्नल में इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन, या फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये डिस्कवर हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन से जर्नल में पब्लिश हुई। और इस पेज को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस भी आ जाएगा, कोडिंग, नॉन कोडिंग रीजन्स, इसके अलावा एक्सॉन और एंट्रॉनिक रीजन्स भी आ जाएंगे। सो ये सिंपली जो है वो जीबी फॉर्मेट में हमारे पास आ जाता है। इसमें हम सिंपली अगर हमें सिर्फ फास्टा फॉर्मेट चाहिए तो सिंपली इस फास्टा जो ये बटन है इसको लिंक, इसको आप सिंपली क्लिक कर देंगे और आपके पास जो है ये नेक्स्ट जो विंडो है ये आ जाएगी जिसमें हमारे पास फास्टा फॉर्मेट आ जाता है। फास्टा फॉर्मेट में सिंपली हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है और उसकी जो एक स्टार्टिंग टैग लाइन है वो ग्रेटर देन साइन के साथ स्टार्ट होती है, फॉलोड बाय द स्पीशी नेम एंड देन द जीन नेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जेन बैंक डेटा जिसमें हमारे पास एक जीबी फॉर्मेट में भी हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और देन द फास्टा फॉर्मेट। यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस डेटा बाय एंड सेव इट टू योर लोकल डायरेक्टरी। अपने सिस्टम के अंदर इस डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हैं। So the next is how can we utilize the GenBank data? So simply GenBank को basically sequence retrieval के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद comparative genomics, जिस तरह हमने पीछे देखा कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं ह्यूमंस के अंदर टोटल 86, तो उन सारी ट्रांसक्रिप्ट को आप सिंपली डाउनलोड कर लें और उनको ब्लास्ट कर लें तो आपके पास जो है वो हिट्स आ जाएंगी। सो कंपैरेटिव जीनोमिक्स के बाद फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बेसिकली होती है कि आप किसी भी जीन का जो है वो इवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं एंड ऑब्वियसली लेटर प्राइमरी डिजाइनिंग एंड प्रूफ डेवलपमेंट। सो ये सब जो है वो फील्ड्स हैं जिधर हम जो है ये न्यूक्लियोटाइड डेटा जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज ENA। ENA इज बेसिकली यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ENA इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर जीनोमिक एंड अदर कंपैरेटिव रिसर्च। इसके अलावा जो ENA के अंदर ऑलमोस्ट 45 मिलियन डिफरेंट ESTs हमारे पास जो है वो मौजूद हैं from 1400 different eukaryotic species. And as far as ENA is concerned, so ENA also stores the complementary data. What complementary data is basically? Complementary data basically हमारे पास होता है ENA जो स्टोर करती है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स जो जितने भी यूज़ करके हमने डेटा रिट्रीव किया है और स्टोर किया है इस डेटाबेस के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके अलावा बाकी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन या इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो सारी ENA के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सिंपली आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें एंड सिंपली अपना URL पेस्ट कर दें और जो है सर्च बटन जो है वो आप हिट कर दें, आपके पास होम पेज आ जाएगा। होम पेज में वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर टू सर्च और क्यूरी जीन और क्यूरी प्रोटीन। सो टॉप राइट पे भी हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च का, जिधर हम डायरेक्टली एक्सेशन नंबर दे सकते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट नेम डायरेक्टली दे सकते हैं। इसके अलावा एट द बॉटम ऑफ द पेज हमारे पास आ जाता है सबमिट और सर्च के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। सबमिट यानी हमने अगर अपना डेटा कोई इस डेटाबेस के अंदर सबमिट कराना हो तो वो हम करा सकते हैं। इसके अलावा सर्च, सो सिंपली सर्च में चले जाएं तो सर्च में हमारे पास फिर ये नेक्स्ट विंडो आ जाएगी जिधर हम अपनी रेलिवेंट प्रोटीन या जीन नेम जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो अगेन वी विल सिंपली paste TBX5 protein and hit the search button. So this next page will be opened where you can see that almost 53 results are shown. Simply आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट भी आ जाएगी एंड इसके अलावा जो है हमारे पास सिंपली एक एक्सेशन नंबर भी आ गया जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5 प्रोटीन का है होमोसेपियन के अंदर। सो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे, जो हमारे पास ये एक्सेशन नंबर है और हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि रिजल्ट पेज है बेसिकली। सो इस पेज पे ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट जो सिंपल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू आवर जीन वो प्रेजेंट है कि किस ऑर्गेनिज्म में है, इसकी जो ओवरऑल इसके अंदर ये टाइप कौन सी है। जैसे हमने पीछे देखा था कि ये एक मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्ट थी। सो एक जनरल डिस्क्रिप्शन वो भी हमें मिल जाती है सारी इस पेज के ऊपर। और ऑन द राइट साइड
हमारे पास आ जाता है कि हम इस डाटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, लाइक अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर. सो व्यू के आगे हमारे पास यू कैन सी वी हैव द एम्बल लिंक एंड देन द फास्टा लिंक. एम्बल upon clicking the एम्बल link it will direct us to the GB format. यानी एम्बल की हमारे पास एम्बल डेटाबेस हमारे पास ओपन हो जाएगी और उसके अंदर हमारे पास जो है वो GB फॉर्मेट में डाटा आ जाएगा सारा. और फिर इसके अलावा अगर हमें सिंपली सिर्फ सीक्वेंस चाहिए तो आप इस फास्टा लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास फास्टा आ जाएगा. सिंपली व्यू ऑप्शन भी है और फिर डाउनलोड ऑप्शन भी हमारे पास. सिंपली अपनी डायरेक्टरी में इसको डाउनलोड कर लें. इसके अलावा पब्लिकेशन से रिलेटेड और इस तरह के ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ENA. तो ENA डाटा भी since it's the same data as the GenBank, सिर्फ कुछ annotations और bibliography के लिहाज से इन databases में फ़र्क है. So the ENA data is more we can say is richer when it comes to analysis, sequence analysis. So functional या comparative genomics में use कर सकते हैं, metagenomics, microbiome studies में भी use हो सकता है. इसके अलावा different machine learning जो algorithms हैं वो भी हम जो है वो ENA data पे apply कर सकते हैं. Since machine learning के अंदर हमें bulk में data चाहिए होता है, so और machine learning model can train on them. So आप bulk में data download करके उसको जो है उस पे machine learning algorithm को आप apply कर सकते हैं. तो इस तरह जो है different जो genomic जितना भी data है उसके analysis के लिए ENA data को हम use कर सकते हैं. And lastly, we have the DDBJ, the DNA Data Bank of Japan. We have the link, and simply इसकी कुछ description है that it contains both DNA and RNA sequence data, and it's also considered as a secondary database because it works in collaboration with various other databases as well, and it also provides various bioinformatics tools and for analysis. So simply navigate to any web browser and paste the URL www.ddbj.nig.ac.gp and hit the search button, and you will be directed to this home page of DDBJ where you can see that we have the search option. You can also submit your data, and services, we will dig into the services option and we'll see what kind of services DDBJ basically provides. Then DDBJ also provides you supercomputers. If you want to use its services, it will provide you supercomputer to analyze your data and other activities and statistics. Basically, it's for DDBJ's own statistics. Like you can check the activity of DDBJ over annually, monthly, weekly. It's up to you. So let's move toward the services option. We'll dig into it and we'll look what kind of services DDBJ provides. So these are all kinds of different projects that the DDBJ provides. Like अगर आप CRISPR प्रोजेक्ट के डेटा पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास वो इधर से आ जाएगा. बायो प्रोजेक्ट, ऐसे ही जो है ना ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं DDBJ के जो जिसका डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद उसकी एनालिसिस कर सकते हैं. सो सिंपली हमें जो है वो DDBJ का जो रॉ डाटा है बेसिकली हमें वो चाहिए. तो सिंपली जो लिंक है DDBJ आप इसको क्लिक कर दें और आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा जो कि सर्च पेज होगा. एंड इस सर्च पेज पे आप सिंपली अपनी जीन नेम जो है वो एंटर कर दें. TBX5. I'm using TBX5 for the reference because it will be easier for you to search or to analyze the same data. Like इस तरह आप different databases से एक तरह की information आप कैसे retrieve कर सकते हैं. So for that reason I'm using the same gene. So TBX5 को simply paste कर दें और search button जो है वो hit कर दें. You will be directed to this page. ये result page है जिसके आप as you can see we will have like different entries here. और आगे उनके नाम हैं, sequence length है और organism name and everything, सारी details मौजूद हैं. And we have all these entries. या primary accession number है. One by one आप इनको click करके इनकी मज़ीद डिटेल भी ओपन कर सकते हैं. और आप सिंपली जो है ये इनको सिंपली चेक कर सकते हैं
वन बाय वन और डाउनलोड ऑल कर दें तो आपके पास वन बाय वन इन तमाम जितने भी हमारे पास सक्सेशन नंबर आ जाएंगे इनकी जो है वो आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी सीक्वेंस के साथ। देन वी हैव हियर ये सारी जिस तरह मैंने बताया कि हर एक्सेशन की उसके साथ जो है वो डेफिनेशन सीक्वेंस लेंथ और इस तरह की डिटेल भी मौजूद है। एंड देन वी हैव द डाउनलोड बटन, वी कैन डाउनलोड all the data from the DDBJ and then we have that what kind of data we want to store। तो इसमें भी आपके पास ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस इधर मौजूद हैं। फ्लैट फाइल में आपके पास फ्लैट फाइल आ जाती है जिसके अंदर लाइक ये सारा बल्क में डाटा मौजूद होगा, जिस तरह GB फाइल थी जेन बैंक के अंदर, इस तरह फ्लैट फाइल DDBJ भी प्रोवाइड करती है। देन वी हैव द XML फाइल इन फास्टा फॉर्मेट में सिर्फ फास्टा सीक्वेंस होगा हमारे पास। So this was all about the ENA databases, which included GenBank, ENA, and DDBJ. All of these databases contain nucleotide data for analysis.